separate it. How will you do this? How will you separate it? Please, anyone? Yes? Can you separate it easily or it will be difficult? Is it difficult? Because there are just 2 or 3 types of pulses and you just have to separate them. Is it easy or difficult? Easy, okay. So means you can just, everyone has seen this, right? So means you can just pick it out with your hand and keep it aside, okay? There are 3 types of cereals in this and you can just pick it up, put it aside, and all the components, they can be separated. They can be separated or not? Yes, they can be separated, okay. So next, when your mother prepares dal, right? What is the first step in that? What is the very first step? Yes, please answer. Washing. Before washing, what is the step? We clear out and we pick out the small impurities from that, right? This is the very first step. We pick out the small impurities and then put it aside. So means, by which method we have pick up that impurities and put aside? We have used our hand. We can just easily pick out that impurities and put it aside. Is it easy or difficult? It is easy. Okay. So next, when you prepare tea, by which method you separate the tea from the tea leaves? This is very easy method. What do you use to separate the tea leaves from tea? Yes? By using filtration method, right? Means we use a strainer. Okay, that is called strainer, by which we separate tea from the tea leaves. Okay. So means I can guess that you might have guessed the topic, that we are going to study about separation of substances. How we can separate various substances, right? So the topic is separation of substances. Yes. So the first method, which you have already done, you just pick it up by your hand and put the different type of components aside. Means what is this? This is a mixture, right? This is a mixture in which there are 2 or 3 types of pulses I have kept. And when you pick it up, put it aside, then means we have separated the components. We have separated different components from a mixture, and this justifies our topic, which is separation of substances. We have just separated the components, particular components from a mixture, and this is what our first method is, which you have already done, which is hand picking method. You have done this by your hand, by using your hand, and this is what the hand picking method is. Okay, and this is possible. Okay, would you be able to separate these if they were of same size, if they were of same color also? Would you be able to separate? No, this will not be possible. Why? Because hand picking method is only used when there is difference between the size of the particles which are being separated, when there is some difference in the color of the particles being separated, right? Because if the particles are of similar size, would it be possible to separate it easily if they are of same color? If I put different type of yellow colored dal in this, would you be able to separate different type of dals or not? It would be difficult, right? So means hand picking method is only used when you have the particles of different size and of different color also. Is it clear to all? Yes. Okay. So the next method is basically dependent on, means it is based on the property when something is heavier and the other thing which are to be separated is lighter. For example, when we separate the outer layer of wheat grain, the outer layer of wheat grain is being separated, right? This is the wheat grain and its outer layer has to be separated from that. And you all know that wheat grains are heavier in size and the outer layer is lighter in size. For this we will do some activity. Any one student please come here. Quickly please. Any one student.
So you just place your hand here and blow it. What you observe? What did you observe? That the lighter cover particles that were its outer boundary, they just flew away, and the groundnut, which was heavier in size, it has remained at its place. Okay, so in this way the wheat or the rice or the wheat grains, they are separated from their covering, means they are just thrown from a height, and here a fan or a cooler is used, okay, which gives air, and the grain particles which are heavier in size, they fall down vertically, and the particles like its covering, which is light in weight, okay, it falls off at a distance. So this is the way by which we can, you can place it here. So this is the way by which we can separate the substances in which one component is of heavier size and other component is of lighter size, right? So this method is known as yes, this method is known as how do things move in real life? Say a ball is moving on a flat ground and there's no external force acting on it. Will the ball eventually come to a halt? Yes, it will. Have you ever wondered why? Say you're skating on an ice rink and your friend is skating on the road. Whose movement do you think will be smoother? Definitely yours. When you hold a bottle in your hand, why doesn't it just slip through and fall? Sometimes when you're walking around in a mall, do you remember seeing a caution sign to warn you about the floor being wet? What explains all this? Okay, now tell me what you have seen in this video. आपने इस वीडियो में क्या क्या देखा? बताओ बस. Where friction is less, we can move. Okay, where the friction is less, things can move easily. What you have seen in this video? आपने starting में क्या देखा था वीडियो की? A ball is moving. Okay. उसके बाद क्या हुआ था बॉल के साथ? It stopped. Okay. Why does the ball stop? Because it has no force which can make it move. Okay, that's good. Today we will discuss about friction. Our topic is friction. Okay. What is frictional force? I'll be explaining you. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, इट इज प्लेस्ड ओवर हेड. इज इट मूविंग? क्या ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नहीं कर रहा. जब हम इसे एक्सटर्नल एक फोर्स देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? जो अपोजिट फोर्स उस पे अटैक करती है. ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज इन स्टेट पे, रेस्ट पे. ठीक है ना, वो मूव नहीं कर रहा. अगर अब मैं फोर्स अप्लाई करूंगी इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन. यस, दैट्स इट. तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो फोर्स हमेशा ऑपोजिटली एक्ट करती है हमारी फोर्स के. ठीक है, क्लियर है आपको बच्चे? नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. आपको पता है फ्रिक्शन की कितनी टाइप्स होती है? These are the types of friction. फ्रिक्शन की दो टाइप्स होती है मेन, दैट इज स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके, सो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? बताओ बच्चे आप. Static and the other one is okay, kinetic. Do you know what does the word static means? Static word का क्या मतलब होता है? आपने सुना है कभी static? सुना है आपने? Static का मतलब होता है rest. The word static means rest. This object is in rest. ठीक है ना? This is the smoother surface and ये है rough surface हमारे पास. ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है एंड ये कौन सी स्टेट में है? स्टेट ऑफ रेस्ट. जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे
तभी ये मूव करना स्टार्ट करेगा ना. इट विल स्लाइड और इट विल रोल, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेट. ओके, सो हमारे पास स्टैटिक फोर्स कौन सी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी होती है, द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विच इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है वो. अगर हम लोग इस साइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इस साइड से आ रही है, then the object is at motion. Both the forces will cancel out each other. Okay, both the forces will cancel out. बेटा मॉडल है आपके Yes पास? ma'am, yes Explain ma'am, I'm कर showing you. दो। Just explain कर दो। Okay. ये है हमारे पास फ्रिक्शन. ठीक है, अगर हम अपना ऑब्जेक्ट, दिस इज अ वुडन ब्लॉक, अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं, इट इज नॉट मूविंग, राइट. अगर हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ओके, सो इस साइड से हमने फोर्स अप्लाई किया एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग अपोजिटली टू इट. एंड द नेक्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, व्हेन वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट, हमने इसका स्मूथ सरफेस, इसमें मैंने टेपिंग करके स्मूथ कर दिया. अब जब मैं इसे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूंगी, प्लेस करूंगी, इट विल स्लाइड और ये बहुत इजीली हो जाएगा. अगर यही रफ सरफेस पे करूंगी तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम. ओके, सो इट इज गोइंग बट इट इज नॉट बीइंग बैलेंस्ड. ये इधर उधर जा रहा है, प्लेन इजीली नहीं आ रहा. नेक्स्ट वी आर हैविंग रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन पे ये देखिए टायर्स है, टायर्स के साथ वर्क करना कितना इजीली हो गया. अगर मैं अपना ये लोड इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी, ये देखिए, तो ये इजीली कैरी आउट हो जाएगा ना, और हमारी फोर्स भी कम लगेगी. यू डोंट हैव टू वर्क मच. ओके, एंड द लास्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. इस पे आप तीनों चीजों को देख सकते हो. When we will attach this wooden block to this pulley, जब जब हम इसमें भी ऐड करते जाएंगे, लोड ऐड करते जाएंगे, ये नीचे नीचे मूव करता जाएगा. ओके, Firstly, I will start with questioning. Then, why do we need water To survive. to survive? Next, what will I answer? Why do we need water? Where does water comes from in our houses? Taps. Another question? How get water bodies like rivers, ponds, lakes are filled? Filled होती है By rain. by rain. Okay, very good. Do you know water circle? Yes. Okay. थोड़ा बता दो. So today's my topic is water circle. Firstly, I will explain water circle. Circulation of water from land to sky and back to land. ऐसे ही होना. फर्स्ट स्टेप हैगा इवेपोरेशन. इवेपोरेशन की होता लाइक ओशन पॉन्ड्स, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ हीट. हीट कितों मिल रही है?
सन रेज ठीक है रेज ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਵੈਪੋਰੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੈ evaporation वाटर चेंज इनटू किस चेंज हो गया वेपर्स दिस इज कॉल्ड evaporation with the presence of heat then इसी तरह इस मॉडल ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट गया सन हीट एनर्जी ਨਾਲ वाटर की हो गया evaporation ठीक है then next है second step condensation condensation ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹ water vapors in air this change into clouds ठीक है then form क्या होंगे clouds this step is called condensation then next step है condensation ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ presence of water vapors in air is changed into clouds is called condensation third step है precipitation heavy clouds water that comes in land in the form of rain snow hail is called precipitation like this precipitation की है फॉर्म हैवी जो क्लाउड्स ने वो किया रेनफॉल हो रही है ठीक है विद द फॉर्म ऑफ रेन एंड विद द फॉर्म ऑफ स्नो देन फोर्थ स्टेप है collection जो ये सारा वाटर है जो हमने रेन ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰਿਵਰਸ ਲੇਕਸ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਦਰ ਟਰਮਸ ਹੈ infiltration rain water get absorbed हो जाता वा in soil से layers ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ different layers ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ground water pass out this is called infiltration next step है runoff ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਨੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਨ ਆਫ ਠੀਕ ਹੈ then